Hi friends, this is Dr. Abdik. I am from Grace Healing Homeopathy. Today let us discuss one of the very important remedy for skin disorder. Of course, it's a polycrest remedy which we all have studied, which we all have given in our practice. But today I'll discuss only the symptom of skin which I have seen clinically in my practice. Lots of cases I've seen in my practice with these type of symptoms. And the remedy which I am talking about is sulfur. Yes, my friends, sulfur. Now, you put skin at one place and sulfur at one place. It covers all the symptoms of skin related disorder. Today I will share few very important symptoms of sulfur. Of course, it is not possible for me to tell all the symptoms of sulfur in one video, but I'll discuss the important ones which I have seen in my practice. First of all, always remember, sulfur has cracks, fissures, स्पेशली इन विंटर में अगर पेशेंट ने आके बोला पूरे मेरे हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं, ब्लीडिंग होती है उसके अंदर, थिंक अबाउट सल्फर. ऑफ कोर्स सल्फर के साथ में और इम्पोर्टेंट रेमेडीज है, पेट्रोलियम भी है, सीपिया भी है, ग्रेफाइटिस भी है, सोराइनम भी है. बट सल्फर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्रैक्स रहते, फिशर्स रहते, डीप रहते, बहुत डीप एंड ब्लड निकलता है उसमें से. इट इज ब्लडी. पेशेंट आता आपके पास बिल्कुल हाथ स्टिफ रहते, पूरे स्टिफ, वो मोड़ भी नहीं सकते, बहुत दुखते हैं उसको, बहुत स्टिफ हो जाते, ड्राई रहते हो. ऑलवेज थिंक अबाउट सल्फर, थिंक अबाउट अगेन पेट्रोलियम, थिंक अबाउट नाइट्रिक एसिड, थिंक अबाउट मक्सॉल, थिंक अबाउट सारसापरिल ऑल्सो, वेयर द क्रैक्स आर डीप, ब्लडी एंड ड्राई, स्पेशली इन विंटर. एक स्टेप और अगर आपको ध्यान रखना, सल्फर सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम सल्फर है क्रैक्स एंड फिशर्स, स्पेशली एट द ऑरिफाइसेस. अगर ऑरिफाइसेस में क्रैक्स एंड फिशर्स हैं, माय डियर फ्रेंड्स, डू थिंक अबाउट सल्फर. अगर आपके सिम्टम मिलते हैं तो. बट ऑरिफाइसेस पे क्रैक्स है तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए सल्फर के बारे में. आई हैड वेरी इंटरेस्टिंग केस, आई वाज ट्रीटिंग दैट केस फॉर सम डिसऑर्डर, बट दैट वाज नॉट गेटिंग रिजल्ट. आई हैड चेंज वन ऑफ मेडिसिन. एक बार पेशेंट ने आके बोला, डॉक्टर साहब जब भी मैं नहाता हूँ, whenever I have a bath, there is discoloration in my skin which is reddish after bathing. And then the patient said one more symptom which was so very particular about sulfur, that is whenever I am bathing, especially after soap, using soap, the discoloration is in reddish spot, red spots discoloration. And immediately I knew something that was sulfur. This is a very, very important symptom of sulfur. Skin, there is discoloration, red spots after bathing. Especially when the patient says discoloration, red spots आफ्टर बाथिंग विथ सोप, तो पेशेंट क्या करता है, कोशिश करता है कि साबुन से ना नहाए, वो कुछ चंदन यूज़ कर ले, वो कुछ और यूज़ कर ले, या नहाए ना साबुन से ताकि उसको तकलीफ ना हो. बट स्पेशली आफ्टर सोप, रेडिश स्पॉट्स, दैट इज माय डियर फ्रेंड सल्फर. डू थिंक अबाउट सिम्टम. ये सिम्टम इतना इंपॉर्टेंट पेशेंट बता नहीं पाता बिकॉज ही फील वो तो नॉर्मल है, सबको होता होगा, बट डू थिंक अबाउट दिस सिम्टम. नेक्स्ट, इरप्शंस जो रहते हैं सल्फर में, वो फ्रिक्शन से बढ़ते हैं. अब इसका मतलब क्या है? आई हैड अ केस जिसको एक्जिमा था, मतलब हाथ पे जब भी शर्ट पहनता था, स्पेशली लॉन्ग स्लीव ना, वो शर्ट घसता है बोले मेरे को बहुत तकलीफ होती, बहुत खुजली पड़ती, बहुत ब्लीडिंग होती है और क्रैक्स बढ़ जाते हैं. एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ सल्फर, दैट इज इरप्शंस, फ्रिक्शन, स्लाइट फ्रिक्शन एग्रेवेट्स. एक फ्रेंड को था शोल्डर पे सीचिंग इरप्शंस, और हम जब फ्रेंड लोग हाथ रखते हैं ना शोल्डर पे, नहीं हाथ मत रख, बोले मेरे को बहुत तकलीफ होती है स्किन में. स्लाइट फ्रिक्शन ऑल्सो एग्रेवेट्स द कंप्लेंट, एंड दैट इज सल्फर, एंड दैट इज ऑल्सो सीपिया, माय डियर फ्रेंड्स. मीन्स इरप्शंस, फ्रिक्शन आफ्टर स्लाइट फ्रिक्शन aggravates the complaints, that is sulfur. एंड ऑफ कोर्स कोविड के बाद बहुत लोग को स्किन का प्रॉब्लम हुआ, बहुत इरप्शंस आए, स्किन में इचिंग आई, एक्जिमा टाइप हुआ, ड्राई एक्जिमा, वेट एक्जिमा, किसी भी प्रकार का स्किन इचिंग आफ्टर वैक्सीनेशन, माय डियर फ्रेंड्स, थिंक अबाउट सल्फर, थिंक अबाउट सारसापरिला. बट सल्फर इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट ऑलवेज गिव सिलिशिया, डोंट ऑलवेज गिव वैक्सीनम without or thuja without asking the symptoms. Every remedy has got a very interesting and a very particular symptom in relation to vaccine also. So eruption after vaccination, think about sulfur. कभी कभी कोई पेशेंट आता है ना, बोलता डॉक्टर साहब मेरे को ये फोड़ा हुआ है ना, इसके ध्यान मत दो, डोंट थिंक अबाउट दिस, इसको बहुत टाइम लगता पकने के लिए.
मैंने शुगर आई टेस्टेड में शुगर ऑल्सो सब नॉर्मल है, बट बहुत टाइम लगता है इसको पकने के लिए. इसको जल्दी पका के ठीक करो. इसको यू ट्रीट इट एज इफ मेक इट heal faster. So actually he's talking about, he's a sulfur patient. You know why? In sulfur, eruptions, boils which mature very slowly maturing boils. Think about sulfur, think about petroleum also. So when the eruptions and boils are very slowly maturing, think about sulfur. And as I told you, cracks and fissures in the orifices, in the same way, itching of the orifices. Think about sulfur. कि भाई ऑरिफाइसेस में बहुत खुजली हो रही है मेरे को. थिंक अबाउट सल्फर, थिंक अबाउट पेट्रोलियम ऑल्सो. Okay, I told you that eruptions and boils are maturing slowly. Think about sulfur and think about silica and not petroleum. Petroleum is basically itching of the orifices like sulfur. I had a very interesting case, of warts. The warts was very classical cauliflower type, thuja type warts, but it did not work. On the history, we found out that the patient had history of masturbation, and taking that history, I prescribed sulfur and the wart disappeared. So wart after masturbation, think about sulfur, a very, very important remedy. Think about nitric acid, think about sepia, but sulfur is a very, very important remedy. Warts from masturbation. And one symptom that comes to my mind, very important again, patient बोलता है ना, मेरे ऐसे लगता है मेरे स्किन के अंदर ऐसे लगता है बहुत सारे वर्म्स चल रहे हैं. ऐसे लगता है कुट हो रहा है मेरे को. कोई चीटी चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है. सो व्हेन देयर इज सेंसेशन ऑफ वर्म अंडर द स्किन, एज इफ वर्म्स अंडर द स्किन, think about sulfur, my dear friends. Think about nitric acid, think about mercury, think about silica. So these are very, very important symptom of sulfur. Of course there are so many other symptoms. In this video I would just like to share important symptoms of sulfur which I have seen in my practice. My dear friends, do hear this video because I hope it helps you in your practice in understanding sulfur a bit more than what you know already. My dear friends, I hope you like the video, and if you like the video, do share and subscribe. Thank you.